आज जिला कलेक्टर कचहरी पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अनिल धामेलिया की अगुवाई में संकलन समिति की बैठक का आयोजन हुआ था, जिस दौरान डीडीओ ममता हीरपरा, जिला पंचायत के प्रमुख गायत्रीबा महिड़ा समेत विधायकों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। तब आपको बता दें कि सावली के विधायक केतन इनामदार की ओर से संकलन की इस बैठक के तहत विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। खास तौर पर उनकी ओर से नर्मदा कैनाल की मरम्मत के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। तो वहीं विधायक और सांसद की ग्रांट में से जो एम्बुलेंस दी गई है उसे सरकार की ओर से 108 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस मुद्दे को भी सावली के विधायक केतन इनामदार की ओर से उठाया गया था। इसके अलावा गंभीरा ब्रिज दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को सहाय की जो रकम दी जानी है उसे बढ़ाया जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। और साथ ही NHAI और रेलवे के बड़े मुद्दे जिनसे कि ग्रामीण इलाके के लोगों को दिक्कतें होती है, इस बारे में भी चर्चाएं की गई थी। इसके अलावा पादरा के विधायक चैतन्य सिंह झाला की ओर से भी गंभीरा ब्रिज दुर्घटना के पीड़ित परिजनों को मुआवजे की ज्यादा रकम दी जाए और सारी सरकारी सहाय मुहैया करवाई जाए, ऐसी मांग उठाई गई थी। तो वहीं पादरा तालुका पंचायत में एक खरीदारी को लेकर तत्कालीन तौर पर कामगिरी करवाने के मुद्दे को भी उनकी ओर से इस दौरान चर्चा में लिया गया था। और साथ ही पादरा में जो जूट पुरवठा योजना है उसे जल्द पूर्ण करवाने की बात भी उनकी ओर से रखी गई थी। तो वहीं गंभीरा ब्रिज दुर्घटना के स्थल पर जो टैंकर अभी भी लटक रहा है, इस मुद्दे को भी उनकी ओर से उठाया गया था। तो वहीं मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल की ओर से साल 1974 में टेनेंट एक्ट के तहत जिन किसानों ने खेती में से अपनी ज़मीन ना हटवाते हुए 10 रुपयों के स्टैंप पर प्लॉट लगाकर मकान बनाए थे, इस मुद्दे को उठाते हुए जरूरी पेशकश की गई थी। 1976 में जो टेनेंसी एक्ट आयो एमां जे खेडूतोए खेती मुक्ति लीधी नहोती અને 10 રૂપિયાના સ્ટેમ્પ પર જે પ્લોટો પાડેલા અને સૂચિત સોસાયટીમાં લોકોએ મકાન બી બાંધી દીધા છે। એમાં આખા વડોદરા શહેરમાં 5 વિધાનસભામાં આવી સોસાયટીઓ ઊભી છે। એમાં કલેક્ટરશ્રીને અમે જણાવ્યું છે કે તમે મામલતદારને સૂચના આપો। ઘણા મકાનો કાયદેસર થયા નથી, તો જો આવા રાજ્યમાં ને વડોદરા શહેરમાં આવા લાખો મકાનો બાકી છે, એને જો કાયદેસર થાય ને તો એના માટે તમે મામલતદારને ખાસ સૂચના આપો। આજની સંકલનમાં મુખ્યત્વે હાલમાં જે દુર્ઘટના બની છે એમાં જે પીડિત પરિવારો છે તો પીડિત પરિવારોને મૃતકોનું વળતર વધુ આપવા માટે તેમજ એ પરિવારને અન્ય સરકારી સહાયો આપવા માટેની રજૂઆત કરી છે। સાથે જ પાદરા તાલુકા પંચાયતમાંથી કરવામાં આવતા જેમ ઉપરની બીડ તેને મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી, જેના કારણે છેલ્લા 2 વર્ષથી જેમ પરની તમામ ખરીદી અટકેલી છે। તો તેને તાત્કાલિક મંજૂરી આપવા માટે અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકાર જેમ ઉપરથી જે ખરીદી કરવામાં આવે છે તેનો પ્રોસિજર ઝડપથી કરવા માટેની રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે। સાથે જ પાદરામાં ચાલી રહેલી જૂથ પુરવઠા યોજના તે સત્વરે પૂર્ણ કરીને પાદરા તાલુકાને મહીસાગર નદીનું પાણી આપવા માટેની રજૂઆત કરેલી છે। જે ઉપર ટેન્કર છે બ્રિજ ઉપર એની રજૂઆત મને મળી નથી, પરંતુ સમાચારના માધ્યમથી મને જાણ થયેલી છે। તો તેની કાર્યવાહી ઝડપી કરવા માટે મેં કલેક્ટરશ્રી સાથે परामर्श કર્યું છે અને કાર્યવાહી ઝડપી બનાવવામાં આવશે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।